Hello everyone, welcome to the CommerceAchiever platform. With today's session, we are going to discuss about organization. So, whatever the point we are going to discuss in today's session, how we are going to discuss, first I want to highlight that. So today we will discuss in this session the basic idea about the organization, what is organization, different definitions given by the various scholars, professionals like Knott O'Donnell, Louis Ellen, Wheeler, George Terry. Okay, so we are going to cover many definitions given by the various scholars, and then we will discuss the organization perspective, which is micro and macro level, and concept of organization, which can be a static or the dynamic organizations. So this will be our today's session content we are going to cover. The discussion will be in both the language, first in English and then in Hindi, and the PDF will also be in both the languages, Hindi and English. Okay, so let's begin with our today's discussion. So it is very important to understand about the organization. So I'm using some brief space so that I can help you with the detailed understanding. Okay. So when we say about organization, we definitely come up with the mind picture that an individual cannot live or survive in isolations. They have to interact. There is a need of social relationships and participations among each other. So these individuals are bounded together in a network. It's a kind of network which we call as a social stable relationships among each other. Okay? So what we can see that our society is an organization. It is a large, it's a complex, okay, and it controls the human activity in every way. For example, if we talk about the individuals, they cannot produce everything at their own. They require something from outside. So to meet their needs from outside world, they depend for some of their objective on third person. Clear? So when we talk about the business perspective, there are various jobs. So business obviously involves various jobs. Okay. So these jobs are to be done by individual? No, these are done by various individuals. Okay, which are more suitable for them. They are according to their qualifications. They are posted accordingly. So various jobs done by various people. Various activities should be grouped. Okay, so we can say different individual. Okay, because I don't want you to rectification. I want you to understand the thing. Okay, and if you are the individual who won't able to understand English, don't worry. Soon we will revise with the Hindi also. Then you will understand. So different individual. So these different individuals, they are united. Okay, and these individuals are getting their jobs, and this leads to increase of different activities. I'm writing shortcut of different activities. So these should be grouped into different then functions. We called it a different functions. So when we talk about authority and responsibility, these are fixed at various kind of level. Don't worry if you don't know what is authority, what is responsibility, we will discuss it in the different session. Okay, so these are fixed at various level. All effort should be made to coordinate among different activities among the different individuals so that they can run the work effectively, and leads to the reduction in the cost of production. So if the cost of production is reduced, definitely the organization may be able to increase their profitability. So we need various individuals, their individuals' effort, which lead to the achievement of common business goals. So now we can conclude organization is what? Organization is the structural framework. It is a framework of duties and responsibilities from whom required from the personnel in performing their various functions to achieve the common business goal. I talked a lot about this. Let me conclude in Hindi so that our different learners may take the benefit, and then we'll move towards the various definition. Okay, organization क्या है? हमने ये देखा कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अकेले नहीं रह सकते, वो अपनी नीड्स के लिए किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे, सोशल रिलेशन क्रिएट करेंगे, अदर का पार्टिसिपेशन उन्हें चाहिए होगा. तो सारी चीज़ें वो घर पे नहीं बना सकते हैं, वो बाउंडेड हैं कि उन्हें एक सोशल
नेटवर्क चाहिए, एक सोशल रिलेशनशिप चाहिए, एक स्टेबल सोशल रिलेशनशिप चाहिए। तो अब ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से हम सोसाइटी के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी काफ़ी लार्ज है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बिजनेस के बारे में सोचें तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, जो हर जॉब एक ही व्यक्ति तो नहीं कर सकता, डिफरेंट पीपल्स होते हैं, वो सारे जो जिस पोस्ट के लिए सुटेबल होता है वो उस काम को करता है। अब ये जो जॉब करते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, डिफरेंट कार्य, डिफरेंट एक्टिविटी, और ये जो एक्टिविटी है ये डिवाइड इसमें ग्रुप हो जाती है, डिफरेंट फंक्शंस में ग्रुप हो जाती है। जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफरेंट लेवल पे बांट दी जाती है। हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, जो सर्विस का कॉस्ट है वो कम हो, प्रॉफिट बढ़ता जाए। हर इंडिविजुअल अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ एफर्ट देते हैं ताकि जो बिजनेस का गोल है, जो कॉमन गोल है, वो अचीव हो सके। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। ठीक है, किसका, जो ड्यूटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक ढांचा है, जो इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस को कंडक्ट कर रहे हैं ताकि क्या करें, एक कॉमन गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर सकें। तो ये तो हमने ले लैंग्वेज में बातें करी, और आई बिलीव अगर आप आज तक जो इस डिफिनीशन को रटते अगर आ रहे हैं तो आज के बाद आप इस डिफिनीशन को रटे नहीं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अभी और अच्छे से क्लियर कर लूँगी जब मैं डिफरेंट ऑथर्स की डिफिनीशन को काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। 80% मेरी कोशिश रहेगी कि वो आपके माइंड में आज ही के आज सेटल हो जाए। ठीक है, बाकी 20% आप रिविजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी डिफिनीशंस। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी डिफिनीशन है वो है लुइस एलन की। ठीक है, अब आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो क्या आप सोचते हो कि क्या स्कॉलर की डिफिनीशन लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। लिख दोगे तो अच्छी बात है, गलत मत लिख के आना। अंडरस्टैंडिंग इसलिए करना ज़रूरी है कि आपकी टर्मिनोलॉजीज के प्रति काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी, ट्विस्टेड क्वेश्चंस को, ट्विस्टेड टर्म्स को काफ़ी ईजी फॉर्म में आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, नो मैटर आइदर फॉर द इंटरव्यू और इन योर रिटन एग्जामिनेशंस। So let's see about the Lewis Allen. What do you want to say? Organization is the process. लगातार चलेगा। Organization is the process of identifying and grouping work. Identify करेंगे और work को group करेंगे। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का एक जैसा काम नहीं है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग काम कंसर्न है तो उसमें भी डिवाइडेड होता है कि शू मैन्युफैक्चरिंग है तो वो दूसरे पैमाने दूसरे तरीके से काम करेगी, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है तो दूसरे तरीके से काम करेगी, और अगर मानो कोई ऐसी कंसर्न है जो सपोज बिस्किट बना रही है या कोई और अगर प्रोडक्ट बनाए तो वो दूसरे तरीके से काम करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस, इट इज कीप ऑन गोइंग ऑफ आइडेंटिफाई द वर्क एंड ग्रुप द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, define and delegating. Delegating means giving to somebody else, because all the tasks is not done by the one individual. They need to be delegated among different individuals. So to be performed, define and delegating responsibility and authority. Okay, and establishing relationships. Establishing a relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. Okay, so what Lewis Allen want to say that organization is a process, it's a regular process of what, of identifying the work, identify the work which an organization need to do, group those work, okay, which need to be performed, define and delegate responsibility and authority. They define and delegate. They define means what all responsibilities need to be taken care in that particular organizations on their charge. They define that, they delegate them accordingly. And establishing the relationship for what? For the purpose of enabling people to work together most effectively together in accomplishing the goals, not particular objective. So organization is an instrument for achieving the organizational goal.
the work of each and every person is defined, and authority and responsibility is fixed for accomplishing the same. I hope it's clear. Please, in case of any doubt, feel free to ask in a question. So I'm going to come up with some kind of questions. Okay, what do you think that organization is static? And you explain. So you can explain with the help of this word that organization itself cannot be static, but partially it can be static because authority and responsibilities are fixed for accomplishing the common objective of an organization. And various people who are delegated among on the basis of their quality, on the basis of their qualifications, they are performing their task, that work is identified, they are grouped, okay, and then authority and responsibility delegated among them and established for the people to work together and to achieve the common goal. The organization is the main objective is to achieve the goal, but their task, their work is defined, is fixed. So partial answer is yes, organization is fixed, and partial is not. Okay. I hope it's Louis Allen is clear. Let's move ahead with the not so Donald. The establishment of authority relationship. Again, it's talk about the establishment of authority relationships with provision for coordination between them. So authority relationship with the provision of coordination between them both vertically and horizontally. So it should be in both the ways. Okay, that authority should be established in both horizontal and vertical form in the enterprise structure. Okay. So here the authors view organization as a coordinating point among various persons in the business, either it's vertical or horizontal. Clear? Let me conclude in the other language. First we'll do the Wheeler and then we conclude in other language. Wheeler. Internal organization is a structural framework. Structural means it's a structure. Who reports to whom? So Mr. A, B, C, D means it's a structure, okay, of duties and responsibilities required of personnel in performing various functions within the company. It is essentially a blueprint. It is a blueprint. That means I want to say organization is a structure which brings up the blueprint for action, resulting in a mechanism for carrying out function to achieve the goal set up by company management. In Wheeler's view, organization is a process of fixing duties and responsibilities of persons in an enterprise so that business goals are achieved. I hope it's clear. Let's conclude in the other language. Tell me move forward with the various more authors' definition of the organization. लुइस एनल क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमने बेसिक आइडिया ले लिया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो लुइस एनल क्या कहना चाहते हैं? लुइस एनल कह रहे थे भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये कह रहे भाई ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो लगातार चलेगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया एक बार एक्टिविटी की और डन हो, नहीं, ये प्रोसेस है, लगातार चलेगा। और लगातार क्या होगा? लगातार काम को खोजा जाएगा, आइडेंटिफाई करना है और उसे ग्रुप करना है। सेल्स डिपार्टमेंट एक तरफ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक तरफ है, तो काम को, वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे, खोजेंगे और फिर उनको ग्रुप कर लेंगे। भाई सेल्स में भी आजकल क्या होता है, डायरेक्ट फिजिकल सेल है, आप डायरेक्ट 1-on-1 बेसिस में कस्टमर से मिल रहे हो। फिर उसके बाद सोशल मीडिया वाली आ गई सेल्स की बात, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, तो आपने आइडेंटिफाई करना है वर्क को और उसको ग्रुप कर लेना है। लुइस एलन का कहना है, ठीक है, कौन ये वो वर्क होंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ इन्होंने बोला कि हमें किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देनी है उसे भी डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद आपस में बांट देना है, डेलीगेट कर देना है, ठीक। और सब लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेना है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो मिल सके। क्लियर? सो ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and grouping work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. Okay?
आई होप इट्स क्लियर, प्लीज रीड दीज वर्डिंग्स। कनॉट सोडोनी क्या कहना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई, ये भी बोल रहे हैं आप अथॉरिटी स्टैब्लिश कर दो, और वो इस अथॉरिटी जो स्टैब्लिश हो जाती है वो एक तरीके से रिलेशनशिप है, और वो हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए और वर्टिकल भी होनी चाहिए, और ये एक स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उन्होंने बोला चाहे भाई आप वर्टिकल काम कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल काम कर रहे हो, आप दूसरों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, और यही एक स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से आपको काम करना है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स विद प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। क्लियर? व्हीलर क्या कहते हैं, ये तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, यानी एक स्टैटिक पिक्चर लेके आ रहा है, बाहर की पिक्चर से इनका मतलब नहीं है। सो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, किस चीज़ का, ड्यूटीज़ का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, किसको क्या काम है, किसकी ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, उसका एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो ढांचा और स्ट्रक्चर जो है चाहता है कि भाई जो पर्सन है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कंडक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, यानी ये एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट लेके आता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, इसको ये फंक्शन करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो मैनेजमेंट ने सेट किया है वो पूरा हो सके, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, व्हीलर है। So internal organization is a structural framework of what? Of duties and responsibilities for required of personnel in performing various functions within the company. It is essentially a blueprint for action, resulting in mechanism for carrying out function to achieve the goal which is set up by the company's management. I hope these three definitions are very clear. Please, in case you have any doubt, don't take with you at your home. Feel free to ask in the comment section and let me help you. Okay. Next is George Terry. We are going to cover many definitions that organization word is very get cleared in your mind. Organizing is the establishing of effective authority relationship. So when you can see, it's all about authority and responsibility. It's a blueprint. It's a structure, right? So organizing is establishing of effective authority relationship among selected work person, workplace, in order for the group to work together efficiently. So what Terry want to say? That organization is about the creation of relationship among person and the work, so that it may be carried in a better and efficient way. Okay? So George want to focus that organizing means setting everything is organized. That is what means you have an effective authority, do that work, that about selected work you have to do. The person have that kind of authority, and they all together they form a group, and they grow work together efficiently. Clear? Oliver Sheldon, organization is a process. Again, the process. So combining the work which individual or group have to perform with the facilities necessary for its execution. That the duties so performed provided the base channels for the efficient, systematic, positive and coordinated application of the available effort. Organization helps in efficient utilization of resource by dividing the duties of various persons. So what Oliver Schiller want to convey through its definition, that is say, okay, organization is again a process. It's never ending. It's a process. Keep going. Process is a keep going. Of about what? About the work. Who do these work? An individual. These individuals together form a group. They do the work. They perform. Okay? So within what? Within their necessary for its execution facilities. They given some facilities. Like you given a laptop. You can work with the help of that. What if you don't give it the laptop? You cannot use this facility. If you didn't got the laptop, you cannot work. No? So Oliver Sheldon is want to focus that this group can work with the facilities necessary for its execution, and that the duties so provided with the best channel for the efficient, systematic, positive and coordinated application. Okay.
application of the available effort. I hope it's clear. Spriggle. In its broadest sense, organization refers to the relationship between the various factors. So what and only various factors, not only the people but other factors also. So hope you learned the factors, okay? Present in a given endeavor. Factory organization concerns itself primarily with the internal relationship within the factory, such as responsibility of person, arrangement and grouping of machine, material control. From the standpoint view of the enterprise as a whole, organization is a structural relationship between the various factors in the enterprise. So when we want to conclude about the definition of Spriggle, we want to focus only on the what factors, and it's saying that organization is nothing but the relationship between the various factors. It's a structural relationship between the various factors in the enterprise. Okay. Let me conclude in the Hindi, then we'll just move ahead with more definitions in this session. जॉर्ज टेरी क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना. हमने कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करनी, तो क्या ऑर्गेनाइज करना है. इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है एक अच्छी अथॉरिटी रिलेशनशिप बना के रखना, किसके बीच में, काम के बीच में, पर्सन्स के बीच में, ठीक है, और जहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है. और जो ये लोग काम करते हैं ना, वो सारे ग्रुप हैं, पीपल्स, बहुत सारे जो पीपल्स हैं, दे फॉर्म अ ग्रुप. ये एक साथ काम करेंगे, ये एफिशिएंटली काम करेंगे, ठीक है. तो ये जो जॉर्ज टेरी है, ये फोकस करना क्या चाह रहे हैं, रिलेशनशिप क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं, किसके, पीपल पे और वर्क पे, दोनों पे, और ये दोनों ही अच्छे से कैरी होना चाहिए. क्लियर. ओलिवर शेल्डन क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है भाई, ये भी लगातार चलेगा, ठीक है. क्या कंबाइन कर रहे हैं, वर्क. कौन करता है ये वर्क, इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं. कैसे करेंगे, जो भी उनको फैसिलिटीज मिलेगी ये काम करने के लिए, वो वर्क परफॉर्म करेंगे, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, अपनी एफिशिएंट फॉर्म में, सिस्टमैटिक, जो बताया गया कि भाई आपने ऐसे करना है, इसके बाद करना है, आपने इसको इन्फॉर्म करना है. सिस्टमैटिक अप्रोच होना है उनका, पॉजिटिव जो है एप्लीकेशन होनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. आप अगर मानो सेल्स वालों को फाइनेंस वाले के पास मुंह उखाड़ के बैठ के, नहीं मेरे को नहीं जाना फाइनेंस वालों के पास, ऐसे नहीं. देयर शुड बी पॉजिटिव एंड कोऑर्डिनेटेड एप्लीकेशन ऑफ द अवेलेबल एफर्ट्स, ठीक है. स्प्रिगल, व्हाट इट वांट टू से स्प्रिगल, इन्होंने कहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिलेशनशिप है वेरियस फैक्टर्स. इन्होंने बार बार दबाव किस पे दिया है, फैक्टर्स पे. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक ढांचा बनेगा. दैट्स इट, ठीक है. So kindly read this definition multiple times so that you get a good vocabulary if you are writing any kind of examination. Okay, moving ahead, Spriggle said one more definition, and it's a much more wider definition of organization, and he described that relationship among the, we already learned the person and factors in the organization, and all factors of production need to be coordinated in order to achieve the organizational objectives. It's a continuation, okay. Okay, CH Northport. The arrangement by which tasks are assigned to the men and women so that their individual effort contributed effectively to some more or less clearly defined purpose for which they have been brought together. According to Northcott, the purpose of organization, okay, is to coordinate the activities of various individuals working in organization for the attainment of enterprise goals. ठीक है. L.H. Henne, organization is the harmonious adjustment of specialized part for accomplishment of some common purpose or purposes. So organization is what? It's an adjustment of various activities for the attainment of common goal of an organization. Okay? So let me conclude in other language. स्प्रिगल का ये कंटिन्यूशन है जो हमने अभी डिफिनेशन डिस्कस किया. इन्होंने बोला कि इन्होंने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया है. बोला कि जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है. क्लियर. CH नॉर्थकॉट क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने बोला कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है कि ये सारी एक्टिविटीज़ को आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, और वो एक्टिविटी कौन कंडक्ट करे, डिफरेंट इंडिविजुअल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एक गोल को अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. ठीक है. सो द अरेंजमेंट बाय विच टास्क आर असाइन्ड टू द मेन एंड वुमेन so that their individual effort
individual efforts contribute effectively to some or more less clearly defined purpose for which they have been brought together. Clear? Many of you may not know some of the definition. For example, I want to highlight. Okay, पहले एल.एच. हेनी डिस्कस कर लेते हैं. तो एल.एच. हेनी क्या कहना चाहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक हार्मनी एडजस्टमेंट है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का, जिनका मेन उद्देश्य क्या है कि एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन गोल को पूरा करें. ठीक है. So some of you may not know few definitions which I will discuss in the separate session. Authority, responsibility. Some of you may not know. Okay. So I'll cover it in the separate session. I'll discuss its definition in the community section. Please go and read there. And in case of any inquiry, do ask. Okay. So authority and responsibility. Some of you may not know what it's mean about the authority and responsibility, so I'll cover it separately. And one more thing, efficient and effective. Okay. These four things so far. So if you have any other query, feel free to ask, or else we'll cover in the separate session. Okay, these definition. Okay, Keith Davis. Organization may be defined as group of individual, large of small, or large or small, it is cooperating under the direction of executive leadership in accomplishment of certain common objective. So what Keith Davis want to say, that organization is about the group of individual, it may be large or small, that is cooperating under the direction of particular leadership for the common objects. Next is Chester I. Bernard. Organization is the system of cooperative activities of two or more persons. Okay, let me conclude in the other language. Keith Davis का मतलब क्या है? Organization क्या है? Group of individual काम कर रहा है. Group यानी large भी हो सकती है group और small group भी हो सकती है. ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को cooperate कर रहे हैं, जिसकी एक leadership के अंदर, एक leader के अंदर, ताकि एक common object को पूरा कर सके. जस्ट टाइप पे नॉट क्या कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सिस्टम है. सिस्टम जैसे ही आए ना माइंड में, तो कंप्यूटर सिस्टम याद कर लिया करो, जो आपस में इंटरकनेक्टेड है. तो दे आर कोऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय टू ऑफ अस. क्लियर? सो आई होप आपको जो बेसिक आइडिया भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो क्लियर हो चुका हो. ये इतनी सारी मैंने डेफिनेशंस बताई, ये आपको क्लियर हो चुकी हो. कोई डाउट है प्लीज उसे पूछेंगे. एग्जामिनेशन में डिफिनीशन कोट करना मैंडेटरी नहीं होता. अगर कोट करेंगे तो ठीक है, ये एक वैल्यू एडिशन होगा, बट करेक्ट कोट करेंगे, रॉन्ग कोटेशंस नहीं देंगे. ये रिक्वेस्ट है आपसे. ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू अंडरस्टैंड दीज डिफिनेशंस, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन. Okay, then moving ahead in this particular session about the concept of organization. So we know organization is not in isolation. There are interaction about inside and interactions in the outside world. So when we talk about the static concept and dynamic concept, so static concept, it is about the organization is a structure within the entity. Its internal organization is a structure, an entity or a network of relationships of the activities, relationships of the functions, relationships of the different peoples. So organization is about the group of people who are bound together to perform formal relationships to achieve some common objective. Okay, so it's mainly focusing on position, not an individual. Okay, the static is focusing on your position, who belongs to who, not an individual. In according to static concept, individual may come and go, but position, the structure is static, fixed. Clear? Dynamic concept, I'll read this, don't worry. First let me explain. Dynamic concept is the organization is an ongoing activity. It's a dynamic. Okay, so it's in process of organizing work, the people, the system. So determining different activity which is necessary for achieving the objective of an organization. Okay, so it is dynamic, it is keep on moving. Okay, means it considered organization is an open system. Okay, not a closed system. In static it is closed, but in dynamic it is an open system. We call it as an open system. Okay, so we can say it is organization as a process or as a unit. Okay, so let me read these terms and then I'll conclude in Hindi, and still if you come up with any doubt in the concept, feel free to ask.
There are two concepts of organization, static and dynamic concept. Static concept. Under static concept, the term organization is used as structure, an entity or a network of specified relationships. In this sense, an organization is a group of people bound together in a formal relationship to achieve common objective. It lay emphasis on position, not on individual. Dynamic concept. The term organization is used as a process लगातार of an ongoing activity in the dynamic concept. ठीक है? In this sense, an organization is a process of organizing work, people and the system. It is concerned with the process of determining activity which may be necessary for achieving an objective and arranging them in a suitable groups so as to be assigned to an individual. It considers organization as an open adaptive system, not as a closed system. The dynamic concept lay emphasis on individual and consider organization as a continuous process. Or the term organization is used in two ways here. Organization as a process that keep on changing, that keep on going on, and organization as a unit. So organization may be identified as the aggregation of human beings deliberately and consciously created for the attainment of certain goal with rational coordination of closely related activities. Clear? So let me conclude in Hindi. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो दो भागों में डिवाइडेड है जनरली, स्टैटिक एंड डायनेमिक. तो स्टैटिक यानी फिक्स्ड, एक ढांचा बना है, एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट बना है, तो वो फिक्स्ड है. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोजीशन है वो फिक्स्ड है, इंडिविजुअल चेंज होगी बट पोजीशन फिक्स्ड है. दैट इज अ स्टैटिक, एक क्लोज्ड कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है. लेकिन डायनेमिक क्या है? ये ओपन है. ठीक है. ऑनगोइंग एक्टिविटी, प्रोसेस. डायनेमिक है, चेंज होता रहता है. पीपल हो, वर्क हो, सिस्टम हो, चेंज होता रहेगा. ठीक है. जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, कोई जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी. तो ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन एडॉप्टिव सिस्टम माना गया है डायनेमिक नेचर के अंदर. ठीक है. जहाँ पे इंडिविजुअल पे एम्फेसिस किया गया है और बोला गया ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है. तो यहाँ पे भी हम इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को दो तरीके से देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो लगातार काम करता है, चलता रहता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ यूनिट है. क्लियर? आप इसको रीड कर लेंगे. कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे. नेक्स्ट इज मूविंग हेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पर्सपेक्टिव, माइक्रो एंड मैक्रो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You need to understand that because I was in a I want to say that I don't want to specify that specific thing, but I was in one of the panel of interview and people don't know this basic thing. Okay, so you should understand this. The micro perspective of an organization. Micro means small, steady focus on human beings. So I just want to give you a lay understanding so that you get a good concept, and then we'll go into the words. Okay. So micro perspective of an organization is focused on human being. This is an organization. It's a big, you can see it's a big, okay, and different individual, there are small people. Okay, there are n number of small people working out there. They are individuals. So that's a human beings we called it. So this is we called as micro, and the bigger we called a macro. Hope you know that. Economics, if you don't know, please go to the economics playlist. It's already there. So micro means smaller, the people, the human beings who are working in the organization. So it's all about the studies of human beings and individual psychology. They make up their interactions with other individuals, their interaction in team and group. So how to deal with their behavior, their strategies need to be governed. Okay, so this is all about covered in the micro aspect of organizations, which is a matter of organization behavior, and this leads to your subject known as OB or organization behavior. Clear? Macro, the organization itself, it's big. The organization is big. So the macro concept. The macro perspective consider organization as a unit of analysis. It emphasizes the study of human behavior as a collectivity of people and deal with how an organization is structured, how technology affects in the organization, how an organization interacts with its environment. So the macro aspect of an organizational study is the subject matter of organization theory.
where you are going to learn about the organization. That means today we are learning about organization is fall under the organization theory. I hope it's clear. Let me read this for it. Okay. The micro perspective of organizational study focus on human being in organization. It study human beings as individual psychological makeup, his interaction with other individual and groups, variables determining his behavior in the organization, and the strategy that may be adopted to govern his behavior in a desirable way in the organization. The micro aspect of organizational study is generally the subject matter of organization behavior. So I already read this macro one. Let me conclude in Hindi, then move ahead. माइक्रो एस्पेक्ट क्या है? माइक्रो यानी छोटा. तो अभी क्ले लैंग्वेज में समझते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल काम करते हैं. तो इस क्ले लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ा है तो उसने को हमने बोला मैक्रो, और पीपल इंडिविजुअल बहुत कम है तो उसे हमने बोला माइक्रो यानी छोटा सा. ठीक है. अब जब इंडिविजुअल है, माइक्रो है, छोटे हैं, तो उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. और मैक्रो यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में पढ़ना है, यानी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. आई होप इट्स क्लियर. आप इसको रीड कर लेंगे, कोई डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर लेंगे. ठीक है. आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट डिफिनीशंस और ऑर्गेनाइजेशन का नेचर जो आपको क्लियर हो चुका, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट एंड पर्सपेक्टिव, ये तीनों एरियाज आपको क्लियर हो चुके हों. कंटेंट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख सकते हैं. इसको रीड करें मल्टीपल टाइम ताकि एक अच्छी वोकैबुलरी आपकी डेवलप हो. ठीक है. इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट ले, कंटिन्यूशन सीरीज हमारी रहने वाली है. आपका इक्वल पार्टिसिपेशन रहना चाहिए ताकि हम और भी क्वेरीज एंड डाउट्स को साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे. ठीक है. सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.